So hello, we were doing the complete course for NABARD and we have already completed agriculture and rural development. We are already doing ESI, that is economic and social issues. We are doing 500 questions, very important for computer and with a lot of explanation, and 2000 most important question series for NABARD, in which we are taking ESI and agriculture and rural development. All of these are already live. At the same time, for agriculture and rural development, you will find a 7 hour ka video. In just one video you can complete your entire agriculture and rural development if you haven't done it till now. Even if you have done it, then also that video is going to be very fruitful for you. In this we are taking the entire theory, previous year question, all the previous year question from agriculture and rural development, at the same time important MCQs and expected questions or our flashcard and revision. In just one video you will be able to cover entire agriculture and rural development. At the same time you can follow Telegram, on which you will find a lot of important content PDF related to this exam as well as the other exams and important notifications. So now coming to this, in this we will complete the entire decision making for NABARD. Decision making is very important in this very scoring. This will really help you score better and clear the cutoff very easily. Okay, there are few things which you have to take into consideration while you are answering decision making a question. So in this we will take from 0 to expert level. Now what do I mean by expert level? You will be able to make question paper in NABARD next year, so obviously not, but you will be able to answer जो भी decision making question है, things that you have to take into consideration while answering questions of decision making, और situational dilemma के question किस तरीके से किए जाते हैं situation based, that we will see in this. So let's start. First overview, decision making questions. Test real world judgment, selecting the best most prudent action when given constraints, resolving conflicts, prioritizing responses to problems, drawing safe inferences, identifying assumptions and discriminating between relevant and irrelevant facts. So you are given some facts, you have to decide that which of these are relevant and which are irrelevant. At the same time, how will you prioritize situations or things when you have 4 tasks in hand and you have to prioritize कि ये I have to do first, then second, then third, then fourth. इतना time I'll give to first, then I'll move to this third one, that this is more important or is having high priority for me. So like that you have to decide among different things or tasks. Then in NABARD, these are short scenario MCQs or situation based, intended to check judgment, ethics and policy sense in rural agriculture context. Now situation ka, like for example, you have cleared this written examination for this and you always wanted to join NABARD, okay? And now today is your interview at 10 a.m. in the morning. You left your home at 9 and when you were going, you witnessed कि एक accident हो गया, ठीक है, and the person is bleeding profusely and there is no one else at the place of accident. Only you are there. Now you can choose only one. Either you can take that person to the hospital and save him, or you can give your interview. You cannot do both. You have to do one only. Now the exam that you have appeared in this time, this is your last attempt, and next year you will not be eligible for this exam. This is your last attempt. Now which one are you going to choose? So obviously in the exam you will get 4 options, like he did this, he did that, and all the explanation, and you have to select the most appropriate answer. Now in this you tell me what you will do, and now we'll talk about all the hacks, tips, strategies to answer all of these questions. Obviously जो इसमें आएंगे वो आपको ज़्यादा आएंगे उस तरीके के जिसमें some agriculture scheme is there, some rural development का point or so on, some related to rural development and some will be general. So let's start. Types of questions. So best course of action, pick the most appropriate immediate step given a situation. Then most या least appropriate, ये choose करने को आपको दे देंगे कि choose the option that is most या least suitable, ठीक है, that you will definitely do या this, or no matter what you will not do this. Okay, then assumptions, identify implicit assumption required for the argument to hold. Then inferences and conclusion, जो भी आपको चीज़ दिया उससे क्या inference हो रहा है, conclusion क्या निकल रहा है, what logically follows from stated facts. Then cause and effect reasoning, identify correct cause or identify which statement explains the effect, क्या इससे हुआ या किसकी वजह से हुआ, that is your cause and effect. Then strengthen, weaken या evaluate, which option strengthens or weakens an argument. Then decision priority sequencing, order of action to resolve multi-step problems, किस order में you will solve, जो हमने बात की अभी कि for example 4 problems are there and then you have to prioritize कि first I'll tackle this, then this, then this,
and so on. Okay, then statement course of action, two statement with option A to D indicating which course of action to take. Then case set, short scenario, usually 3 to 4 sentences followed by 3-4 options. Then ethics, policy judgment, choose action consistent with institutional norms, example legal procedure या equitable. Then what to do, so method is fast. Now this fast का मतलब quick, तो quick तो obviously आपको होना ही है, but what is the meaning of this fast is make this a reflex. Facts first. A. Assumption and authority. S. Solve by stakes and sequence. And T is test with elimination. ठीक है, now we will see detail. Facts first is identify objective facts. Who, what, when, where. Underline them mentally. Separate facts from opinion, emotions and from suggested action in the scenario. जो भी चीज़ें आपको दी हैं, facts दिए हैं, उसको आपको रखना है दिमाग में. Then assumption and authority. Ask what must be assumed for option X to work. If an option requires an unstated, unrealistic assumption, reject. Consider institutional rules, legal, procedural constraint, procurement rules, environmental law, bank lending norms. You have to keep all this in mind. Then solve by stakes and sequence. So ask which action protects life, your livelihood, preserve resources, data, restores normalcy and prioritize life and livelihood. Now for example, there is one situation, आप खड़े हैं, आपने देखा एक कार आके हिट किया एक ट्री को एंड द पर्सन इज़ इंजर्ड. जो उसमें था एक ही पर्सन था, दैट पर्सन इज इंजर्ड. आप उसकी तरफ दौड़ते हुए गए, आप पहुँचे ही थे वहाँ तक जब तक कि एक पर्सन बी आपके पास आया. उसने बोला कि पीछे 3 गुंडे हैं जिनने किसी को पकड़ लिया है एंड दे हैव अ गन. एक लड़की को पकड़ लिया है, बच्ची है वो, एंड दे हैव गन विद देम. ठीक है, और वो अभी बोल रहे हैं कि उन्हें मार देंगे. तो यहाँ पे ये हुआ एंड जितने में आप डिसाइड कर रहे थे कि आपको क्या करना है, इतने में सी आपके पास दौड़ता हुआ आया एंड इसने बोला कि यहाँ पे एक ट्रेन जाने वाली है. ठीक है, उसको पता चला, उसको किसी ने बताया कि ट्रेन जो जाने वाली है, इसका जो रेलवे ट्रैक है, इसको कुछ लोग ब्रेक करने वाले हैं. ठीक है, सो नाउ इफ़ यू आर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन देन द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव इज़, एक क्या हुआ यहाँ पे एक्सीडेंट, दूसरा क्या हुआ ये किडनैपिंग एंड मार देंगे बोला है बच्ची को, इनके पास गन्स भी हैं, 3 किडनैपर्स हैं. ठीक है, गुंडा हमने बात की थी एंड ये ट्रेन है जिसको आगे ट्रैक ख़राब मिलने वाला है जिससे ट्रेन डीरेल हो जाएगी. सो इफ़ यू आर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दैन व्हाट आर गोइंग टू बी दी प्रायोरिटीज़, आपके पास क्या प्रायोरिटी होगी, क्या क्या चीज़ें आपके सीक्वेंस में करेंगे. आंसर दिस. ओके, देन prioritize life and livelihood. If multiple actions required, choose options that combine immediate mitigation and early investigation, long-term fix. Test with elimination. Eliminate extreme options. Always, never, जो आपने दूसरे एग्जाम्स में देखा होगा, जनरली एक्सट्रीम चीज़ों को हम ऐसा लिखा होता है कि दिस नेवर हैपन्स या ऑलवेज, तो जनरली रॉन्ग स्टेटमेंट्स रहती हैं वो. सो सेम थिंग, एक्सट्रीम options always, never, options that are irrelevant or options that violate basic rules. You cannot go against the rules or government norms. Never. ठीक है, so government के rules के against you can never go, so keep that thing in mind. So option that violate basic rules. If two options are plausible, prefer the one that is least risky legally, ethical, operationally and most practical. Then some quick shortcuts or rules. Safety first. In this we'll take questions as well, so don't worry, अभी हम questions भी देखेंगे. So safety first, actions that ensure safety of people and assets are usually preferred. Legality and procedure, prefer options that follow rules, escalate to proper authority when required. Do not assume additional facts. If options depend on an unstated fact, mark cannot be determined or discard. Short term fixes versus long term. The best answer often combines immediate relief and साथ में प्लान फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन. ठीक है, दोनों कर रहा होगा, जो सही ऑप्शन एक होगा दोनों चीज़ों पे काम कर रहा होगा. शॉर्ट टर्म में इमीडिएट जो आपको सॉल्व करना है वो चीज़, एंड लॉन्ग टर्म में कैसे वो प्रॉब्लम अवॉइड की जा सके, सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके. देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज़ लेजिटिमेट. ऑप्शंस आस्किंग टू कलेक्ट डेटा, वेरीफाई बिफोर एक्शंस आर ऑफन करेक्ट व्हेन फैक्ट्स आर एम्बिग्यूअस. कि आपने कुछ कलेक्शन किया, वेरीफाई किया, एनालाइज किया एंड देन यू आर टेकिंग दी एक्शंस. देन अवॉइड एक्सट्रीम्स. Options advocating blanket bans, mass firings or radical unilateral change without consultation are rarely correct unless emergency. ठीक है,
बहुत ही आपके ऐसे नहीं होनी चाहिए एक्शंस एक्सट्रीम। देन कॉस्टली रेमेडीज, रिजेक्ट लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर ऑप्शंस वेयर low cost alternatives exist unless the scenario demands. Then, when in doubt, escalate. If the scenario suggests legal, ethical ambiguity, escalating to a higher authority or legal counsel is appropriate. ठीक है, escalate the problem. आप जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी हैं उनके पास you can go and take the problem. Then how to handle questions, method and traps. क्या क्या चीज़ों में आपको ट्रैप कर सकते हैं. So course of action. Method: read facts, imagine immediate consequences of each option, discard options that break rules or assume impossible facts. जो हमने बात की गवर्नमेंट का जनरल यूज़ जो है लाइफ के रूल्स उनके अगर अगेंस्ट जा रहा है तो उसको कैंसिल. चूज ऑप्शंस दैट इज सेफ प्लस प्रेगमेटिक एंड मिनिमल अजम्पशन. कुछ एक्सट्रीम अज्यूम नहीं कर लेना तो मिनिमम अजम्पशंस के साथ. ट्रैप इज अपेयर्स डिसाइसिव नॉट करेक्ट. ठीक है, अगर लग रहा है डिसाइसिव तो दैट डज नॉट मीन कि करेक्ट. ब्रैश सॉल्यूशंस ऑफन फेल. अजम्पशंस तो आइडेंटिफाई कंक्लूजन, फाइंड अनस्टेटेड प्रीमाइस नीडेड टू रीच कंक्लूजन. जो आपको लग नहीं रहा है, सीधा नहीं दिया हुआ है पर आप कहीं से कंक्लूजन के वे में निकाल सकते हो तो रीच दैट. इफ रिक्विजिट इट इज़ एन अजम्पशन. ट्रैप डोंट पिक ऑप्शंस दैट आर मियरली कंपैटिबल. चूज व्हाट इज़ नेसेसरी. नॉट ऐसा कि बस हाँ ठीक है कंपैटिबल है हो सकता है, वो उसकी बजाय क्या चूज़ करना है आपको, दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी. देन चूज़ ओनली व्हाट मस्ट फॉलो. इफ ऑप्शन कुड बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली ट्रू या रिजेक्ट. देन ट्रैप अवॉइड ओवर इन्फेरेंस बियॉन्ड गिवन फैक्ट्स. बहुत ज़्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं लगानी सोचने में. यू हैव टू बी लॉजिकल एनालिटिकल. जब आप इन्फेरेंस कर रहे हैं, लॉजिकली कंक्लूड कर रहे हैं कुछ, तब. स्ट्रेंथन या वीकन. Ask whether option increases or decreases confidence in conclusion. Look for casual links. Then traps don't confuse relevance with direct effect. Then sequencing या prioritization. So apply stakes and sequence. Safety, information, containment. Then repair and rehabilitation and prevention. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है जहाँ फ्लड आ रहा है, फ्लड आ गया है, तो आप क्या क्या कर सकते हो. आने से जस्ट पहले यू कैन इवैक्यूएट पीपल फर्स्टली, जितनों को आप कर सकते हो उससे पहले. ठीक है, और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, उनके सेफ्टी, खाना, रहने का कहाँ वो देखेंगे. ठीक है, उसके बाद जब आ ही गया है तब यू विल डू मोर इवैक्यूएशन. देन आपने टीम्स बुलाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिलीफ के लिए. ठीक है, एंड देन यू विल टेक सम मोर एक्शंस, फूड का बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करोगे आप. बट अभी का आपने सब कर दिया, उसके बाद फ्यूचर के लिए भी विल डू समथिंग. एम्बैंकमेंट्स बनवाओगे अगर आपको लग रहा है कि वो था रीज़न फ्लड का, और यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से फ्यूचर में यू कैन ट्राई टू मिटिगेट दैट. ठीक है, सो ऑल दिस रिपेयर, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन फ्यूचर में. देन ट्रैप डोंट रीऑर्डर. एग्जाम्पल, डोंट इन्वेस्टिगेट लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स बिफोर स्टेबलाइजिंग क्राइसिस. कि आप लॉन्ग टर्म पे चले गए कि हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, एम्बैंकमेंट्स बनवा देंगे इससे कि पानी इधर ना आया है, उसकी वजह से पानी आ रहा था पर आपने प्रेजेंट में कुछ किया ही नहीं. इवैक्यूएशन नहीं किया, फूड प्रोवाइड नहीं कराया, एक प्लेस नहीं ढूंढी जहाँ पे यू कैन शिफ्ट दैम, रिहेबिलिटेशन करा सकें. डिसीजन मेकिंग इन रूरल एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट. व्हेन सिनेरियोज मेंशन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, FPOs आर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में. क्रॉप लॉसेस, प्रोक्योरमेंट, नेचुरल डिजास्टर और क्रेडिट डिफॉल्ट्स. इमीडिएट फार्मर रिलीफ, कंपनसेशन, इमरजेंसी क्रेडिट, फॉडर सप्लाई, सीड्स, ये सब क्या है, इमीडिएट फार्मर रिलीफ. यूजुअली आउट रैंक्स bureaucratic processes. Verification is important but action is often expected. Example, if crop loss is clear and severe, ensure immediate relief and start verification concurrently. Verify आप करते रहना पर अभी के immediate आपको क्या करना है, सर्व करना है, immediate relief का सोचना है. Procurement and MSP, minimum support price issues. Prefer options ensuring fair price, transparent auctions and avoid ad hoc bans. Credit defaults, encourage loan restructuring, immediate counseling, soft loans rather than forcible recovery as first step. कि आपको जैसे बोला गया कि कोई है जिनने पैसे लिए थे आपके बैंक से, अब वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो फोर्सेबल रिकवरी नहीं करनी है. ठीक है, मूवीज़ की तरह. द इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस. इफ प्रोजेक्ट थ्रेटन्स एनवायरमेंट, प्रेफर स्टॉपिंग वर्क असेसमेंट rather than blind continuation. Then data and digital tools using GIS, ENWR, एग्रीस्टैक, हमने ये सब डिस्कस किया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर्स में. और रिमोट सेंसिंग फॉर क्विक वेरिफिकेशन इज ऑफन अप्रोप्रिएट आंसर इफ ऑफर्ड, अगर ऑफर किया गया है तो.
Then how will you manage time in exams? So decision questions are not the heaviest scoring numerically, but are qualifying and high impact. Spend roughly 1 minute you can spend on one, and this thing will definitely help you. But the best to clear the cutoff, as I said earlier as well, कि best है आपको help करने के to clear the cutoff. If unclear, choose verification plus safe mitigation. Gather facts while preventing harm. Mark borderline items and return if time permits. अभी आपका हो जाता है, जो चीज़ें आपने कर रहा थोड़े से कर दो, and then you can return if you have time. Many are eliminable via rules above. जो हमने चीज़ें देखी उसी से बहुत ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. जो हमने बात की कि अभी शॉर्ट टर्म का आपको सोचना है, अभी का प्रेजेंट में क्या एक्शन होगा, एंड देन यू विल टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म. क्योंकि आपको सही तो लॉन्ग टर्म का भी लगेगा कि एम्बैंकमेंट की पानी का वाटर राइज हुआ उस पर्टिकुलर जगह पे, एंड उस लेक के ओवरफ्लो होने से एम्बैंकमेंट नहीं था एंड पानी भर गया, तो एम्बैंकमेंट बनवाना इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. देन अभी रिलीफ का काम करना है एंड देन फ्यूचर में एम्बैंकमेंट, तो आपको वो ध्यान रखना है कि अभी हम प्रेजेंट का इमीडिएट रिलीफ भी सोचना है. नाउ लेट्स कम टू आवर प्रैक्टिस एमसीक्यूज. अ फ्लड हैज़ डैमेज्ड क्रॉप्स across 3 villages. Farmers demand immediate cash compensation. District officer has received only preliminary damage estimates. Best immediate action: wait until detailed survey is completed and then disburse. Provide immediate relief, food and emergency cash, and initiate rapid assessment simultaneously. Then reject request until political clearance. Then announce large scale loan waivers immediately. So the answer is B, that is provide immediate relief. जो हमने बात की immediate relief देना है, then you will think about the future. Food and emergency cash and initiate paid assessment simultaneously. Prioritize immediate relief. Concurrent verification loan waivers are policy decision needing higher authority. An upward trend in fertilizer prices is reported. A bank's field officer suggests halting new KCC Kisan Credit Card loans to avoid defaults. Best decision: halt all new loans, continue lending but reduce loan amount drastically, continue loans with counseling on input efficiency and encourage micro insurance structured repayment options, permanently stop agricultural lending. So the answer is continue loans with counseling on input efficiency and encourage microinsurance या structured repayment options. Support farmers with guidance and risk mitigation. Halting lending harms farmers and institutions. A cooperative report suspected embezzlement by a local official but lacks proof. Member panic is rising. What is best course? Then publicly accuse and remove official immediately. Quietly investigate through audit and suspend official pending inquiry. Ignore until court orders. Close cooperatives to prevent further loss. So answer is quietly investigate through audit and suspend official pending inquiry. Then preserve due processes, maintain trust, perform audit and suspend if prima facie evidence. जो आपके सामने evidences आ रहे हैं, that is prima facie evidence, उनके basis पे. Then up Mandal proposes diverting panchayat funds to build a private cold store for one trader. Best action for district official: approve as it boosts infrastructure, reject, ask for inclusive proposal with farmer producer organization, benefit to farmers and transparent procurement. Approve only if trader offers large bribe, ignore request. ठीक है, ये तो नहीं करना है ना. Then answer is reject, ask for inclusive proposal with farmers producer organization, benefit to farmers and transparent procurement. ये क्यों करेंगे हम, यही क्यों करेंगे? So the thing is, जब भी आपके पास ऑप्शंस हैं तब यू हैव टू सेलेक्ट दी बेस्ट, जो भी आपके हिसाब से आंसर हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर. ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई ही नहीं होगा. बेस्ट पॉसिबल आंसर इज व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट. पब्लिक फंड्स मस्ट सर्व बेनिफिट टू कम्युनिटी, इंसिस्ट ऑन इंक्लूसिव पब्लिक प्राइवेट मॉडल. Then during KCC verification, officer notices forged land documents for loan sanctions. Best immediate step: so recover full loan immediately, file FIR, freeze account, inform bank and initiate correct verification. Ignore to avoid scandal या grant more loans to pacify borrowers. So obviously the answer is file FIR, freeze account, inform bank and initiate corrective verification. Now you see, जो हमने बात की थी 4 अलग अलग चीज़ें, टास्क, उनको कैसे इसने प्रायोरिटी वाइज लगा दिया है
इस ऑप्शन में क्या क्या होगा? पहले एफआईआर फाइल किया, फ्रीज किया अकाउंट को, इन्फॉर्म किया बैंक को एंड इनिशिएट किया करेक्टिव वेरिफिकेशन. Then legal action plus freeze plus verification protects public interest and supports investigation. Then a drought forecast from meteorological department suggests high risk. Bank branch must decide on scheduled crops loan recovery visits. Best approaches: proceed with recovery aggressively, suspend recovery and offer structured rescheduling and advisories. Double interest rates to compensate for risk. Close branch until monsoon. So obviously the answer is suspend recovery and offer structured rescheduling and advisories. In drought risk, prioritize restructuring and relief aggressively, recovery worsen distress. Then a farmer producer organization has defaulted on a working capital loan due to market failure. Options: restructure loan or initiate recovery. Best option is start legal recovery immediately, restructure with time bound plan, conditional grant of advisory, and market linkage support. Convert loan into equity or forgive entire loan. So, obviously, the answer is restructure with time bound plan, conditional grant of advisory, and market linkage support. Restructuring with handholding addresses root cause, then legal recovery harms production in short term. A social media post alleges poor quality seeds distributed under a state scheme. Best first step for an agri officer. Real life situation. Dismiss as fake immediately, order an immediate sample test while informing stakeholders and halting further distribution till verification. Sue the poster and continue distribution ignoring allegations. So obviously the answer is this. Now you can see the planned action. Order an immediate sample test while informing stakeholders and halting further distribution. कब तक? जब तक verification हो. So verify claims quickly, halt to prevent further harm, transparent action. So two subdivisional officers, that is SDO, disagree on procurement norms, interpretation conflict, delays, MSP, minimum support price procurement. Best action by higher authority would be let them sort it out, issue an interim clarifying guideline and proceed with procurement while a formal decision is pending. Cancel procurement for this season. Let market decide without procurement. So obviously the answer is issue an interim clarification guideline and proceed with procurement while a formal decision is pending. कि आपको दोनों चीज़ों का ही ध्यान रखना है. Avoid delay by issuing clarifying directive. Ensure procurement proceeds lawfully. Then there is a disease outbreak in livestock reported in one block. Best immediate action. Wait for statewide confirmation. Quarantine affected area. Initiate vaccination containment. Notify health authorities. Then cull entire district livestock. Ban livestock markets permanently. So the answer is quarantine affected area. Initiate vaccination containment. Notify health authorities. Rapid containment and साथ में veterinary response while coordinating with state agencies. So you have to take care of both. A bank officer discovers a crop insurance claim pattern that appears unusually high from a cluster of villages. Best step would be approve all claims immediately to help farmers, initiate targeted inspection, cross-check remote sensing data and collaborate with insurer or for verification. Then deny all claims in the cluster, publish accused farmers' names publicly. So the answer is initiate targeted inspection, cross-check remote sensing data and collaborate with insurer for verification. Investigate with evidence remote sensing while avoiding blanket denial of genuine claims. A Gram Panchayat wants to use महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, क्या है मनरेगा? गारंटी एक्ट क्या करती है? 100 डेज का अनस्किल्ड लेबर का काम देगी क्या? ठीक है, क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फंड्स फॉर बिल्डिंग अ प्राइवेट रोड benefiting one family who is politically influential. Best decision would be approve, reject and demand project be public. Benefit many household with transparent selection. Approve if family pays extra, ignore procedural norms.
So obviously the answer is reject and demand project be public. Benefit many household with transparent selection. Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act assets must be public goods benefiting the community. An NGO offers free mobile phones for digital agri advisory but requires farmers to register with their private platform and share data. Best course for government officer: accept and allow data sharing freely. Allow only if data privacy assures and interoperability with public agri-stack and farmer consent are ensured. Ban NGO entirely, force farmers to register. So the answer is allow only if data privacy assurance and interoperability with public agri-stack and farmer consent are ensured. Then encourage digital adoption with safeguards on consent, privacy and interoperability. Then a village reports repeated thefts of stored grain in a cooperative warehouse. Best immediate action would be move grain to private warehouses without board approval. ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं, जो कर रहे थे वो कल्प्रेट कहाँ गए? तो स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, ऑडिट वेयरहाउस रिसीट्स, इन्फॉर्म WDRA अथॉरिटीज एंड एक्सप्लोर alternate storage under ENWR. Sell grain immediately to private buyers at discount. Ignore hope theft stops. ठीक है, so the answer is strengthen security, audit warehouse receipts, inform WDRA authorities and explore alternate storage under ENWR. ENWR is very very important as well as WDRA. So what is ENWR? Electronic negotiable warehouse receipt. हमने बहुत डिटेल में पढ़ा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर्स में, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट देयर. देन WDRA इज वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सब डिटेल में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में. देन combine security audit and regulatory routes, avoid unilateral disposal. Then a new pesticide shows higher yields but serious environmental concerns in trials. An agri officer must advise farmers. Best advice would be promote pesticide widely for short-term gains. Advise caution, recommend integrated pest management and await regulatory clearance and long-term studies. अब तक समझ में आ गया होगा कि ऐसे आंसर्स हैं, तो अब से ऑप्शंस हैं तो वही होंगे आंसर्स. बैन फार्मिंग इन द एरिया, फोर्स फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक मेथड्स इमीडिएटली. ठीक है, सो आंसर हमने देख लिया. एडवाइस क्वेश्चन, रिकमेंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड अवेट रेगुलेटरी क्लियरेंस एंड लॉन्ग टर्म स्टडीज़. नाउ एग्जाम में देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर दे दें थोड़े से चेंजेस करके. सो यू हैव टू बी केयरफुल. रूल्स याद रखो जो हमने किए हैं डिस्कस, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. इमीडिएट एक्शन, फ्यूचर सस्टेनेबल हो एक्शन जो भी है वो. देन बैलेंस प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, प्रेफर कॉशन एंड इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस. Then a digital crop survey shows a 30% shortfall in expected paddy area compared to last year. Best initial action for district planner: assume farmers abandoned paddy and reassign funds immediately. Cross verify with ground checks, remote sensing, time series and contact field extension to understand causes, weather, input, supply, market signals. Then increase paddy MSP instantly, order arrest of local officials. So the answer is cross verify with ground checks, remote sensing, time series and contact field extension to understand causes, weather, input, supply, market signals. Then verify data, identify root causes before policy action. Then a well intentioned politician asked to prioritize their constituency for AIF sanctions. Despite weaker project proposals, best reply by officials would be prioritize the constituency, apply transparent criteria and reject projects not meeting norms, offer guidance to improve proposals, secretly funnel funds anyway, resign and protest. So answer is apply transparent criteria and reject projects not meeting norms, offer guidance to improve proposal. ठीक है, तो आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि प्रपोजल जिससे वो इम्प्रूव हो जाए. सो मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, एट द सेम टाइम ऑफर capacity support rather than favorism.
A farmer in debt is proposing to sell ancestral land to repay loans, which would make his family landless. So bank branch head must advise best action would be encourage sale to repay debt immediately, offer debt restructuring linkage to livelihood programs, and counseling before land sale is allowed. Force land sale via recovery agents. Ignore the farmer. So the answer is offer debt restructuring linkage to livelihood programs and counseling before land sale is allowed. Protect livelihoods, last resort in land sale with appropriate safeguards. Then an agri startup promises immediate market for produce but lacks track record. FPO Farmer Producer Organization wants to partner and take a loan. Best decision by Farmer Producer Organization advisory. Enter immediately with full loan. Pilot on small scale includes contractual safeguards, escrow payments and performance milestones before scaling. Refuse collaboration entirely. Allow startup to operate without contract. So the answer is pilot on small scale, include contractual safeguards, escrow payments and performance milestone before scaling. So pilot plus contractual protection mitigate risk and allow learning. Then a sudden outbreak of false rumors about seed contamination on social media is causing panic. So best immediate step for district agriculture officer would be ignore social media, issue factual bulletin, perform rapid sample test, engage local leaders and social media monitors to counter misinformation. Arrest social media user, withdraw all seeds from market. Obviously the answer is issue factual bulletin, परफॉर्म रैपिड सैम्पल टेस्ट क्योंकि वो भी आपको करने हैं टेस्ट भी, एंगेज लोकल लीडर्स एंड सोशल मीडिया मॉनिटर्स टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन क्योंकि उसको भी काउंटर करना है जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है. रैपिड कम्युनिकेशन एविडेंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट रिड्यूसेस पैनिक. Now our flashcards and then we'll see very important tips. So read scenario carefully, identify facts. जो चीज़ें उसमें दी गई हैं, प्रॉब्लम्स जो भी दी गई हैं, जो आपको अभी तक समझ में आएगा कि आपको एक प्रॉब्लम पे नहीं मल्टीपल जो भी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे फोकस करना है. एक स्पेक्ट्रम हो सकता है प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम्स नेस्टेड प्रॉब्लम्स, तो आपको सब पे ध्यान देना है. देन आस्क इज एनीवन एट रिस्क, इफ़ येस एक्शन टू प्रोटेक्ट. इज़ द प्रपोज एक्शन लीगल एंड प्रोसीजर, इफ़ नो देन रिजेक्ट. हमने बात की रूल्स लीगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो सब नहीं होना चाहिए. डज एक्शन रिक्वायर वेरिफिकेशन, if ambiguous verify while providing safe mitigation. Prefer actions that are scalable, low cost, minimal assumption driven and compliant. ठीक है, एज आपको ऐसा नहीं अज्यूम कर लिया आपने कुछ भी एन कर दिया, वहाँ जो लिखा है that thing should be taken into consideration. If choices are between two plausible actions, take the one that preserves options and limits harm. ठीक है, लिमिट कर रहा है harm. Then few very important tips. So trap information unavailable. Choose verification and mitigation. Strong but illegal. Action may be attractive but wrong. ठीक है, आपको लग रहा है हाँ ये होना चाहिए but that would be wrong. Keep an eye for words like immediately, जो हमने बहुत सारे ऑप्शंस में देखा अभी, urgently, escalate, convene. ठीक है, know when each is appropriate. मोस्टली केसेस में आपको गलत ही दिखेगा कि इमीडिएटली ये कर दिया, इमीडिएटली उसे सस्पेंड कर दिया. ठीक है, अर्जेंटली गए एंड खुद खा के देख लिया कि ख़राब था वो. ठीक है, ऐसी चीज़ें. सो जिनमें भी ऐसे आपको वर्ड दिख रहे हैं एक्सट्रीम वाले, वो जनरली यू विल फाइंड रॉन्ग. यूज़ रूरल कॉन्टेक्स्ट लॉजिक. लाइवलीहुड मोर देन पेपर वर्क बट लेजिटिमेसी एंड प्रोसेस स्टिल मैटर. So that's it in this. A lot of content is there on YouTube. At the same time, you will find a lot of PDFs related to this exam as well as the other exams on Telegram. So you can go and have a look. At the same time, you will also find notifications for upcoming exams. So that is very important. And if you have reached till here, then please comment decision making done. Okay. So that's it in this. All the very best and thank you.